Hello everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors, and today we are going to continue our section on the GI tract pathology, and we are going to study the pathology of the pancreas. Today we will be covering acute pancreatitis, chronic pancreatitis, and hopefully pancreatic carcinoma. So first of all, acute pancreatitis. Pancreatitis, as the name suggests, is the inflammation of the pancreas, and acute pancreatitis means that the inflammation has developed recently and it is more rapid in onset. So what happens basically in acute pancreatitis is there is autodigestion of the pancreas due to pancreatic enzymes. As this is as shown here with the yellow arrows, there will be acute inflammation and there will be edema. The causes of acute pancreatitis can be remembered through the mnemonic I get smashed, which stands for idiopathic causes. Gallstones are the most common causes of the acute pancreatitis, by the way. So what happens is that we have this gallbladder and we have this bile duct from the liver, ठीक है. And then we have यहाँ पे अगर for example गोल ब्लैडर में कोई भी स्टोन बनने लग जाएगा, these both are connected with the pancreatic duct that is coming from the pancreas. So अगर ये स्टोन डिसलॉज होके यहाँ पे आके जमा हो जाए, ठीक है. अब पीछे पेनक्रियास पड़ा हुआ है एंड पेनक्रियास का काम होता है कि वो सारे एंजाइम्स को रिलीज करवा रहा होता है. सॉरी, आई विल मेक द डायग्राम अगेन. So for example here is the gallbladder, this is the bile duct, and यहाँ से जो आ रही है liver की bile duct आ रही है, ठीक है. And these both converge at this point. After that this common bile duct meets with the pancreatic duct. तो अगर यहाँ पे कोई भी stone form हो जाए within the gallbladder and this stone gets dislodged from here and gets obstructed in the डक्ट ऑफ द पेंक्रियाज, तो जो पेंक्रियाज यहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइम्स रिलीज कर रहा होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. तो ये एंजाइम्स यहाँ से रिलीज होकर यहाँ पे पास आउट नहीं होंगे और इंटेस्टाइन में रिलीज नहीं होंगे. जब ये एंजाइम्स इंटेस्टाइन में रिलीज नहीं होंगे, सो दिस एंजाइम्स आर सो पावरफुल दैट दे एक्टिवेट ईच अदर एंड दे स्टार्ट डाइजेस्टिंग द पेंक्रियाज इटसेल्फ. दैट इज दी जहाँ से वो रिलीज हुए थे उसी को ऑटो डाइजेशन स्टार्ट करवा देंगे. सो द कॉजेज इंक्लूड इडियोपैथिक गॉलस्टोन्स. अदर कॉमन कॉजेज इंक्लूड एथेनॉल यानी कि अल्कोहल इंजेक्शन, ट्रॉमा, स्टेरॉइड्स, इन्फेक्शन विद मम्स, ऑटोइम्यून डिजीजेज, स्कॉर्पियन पॉइजन, hypercalcemia and hypertriglyceridemia. They are also known factors for the acute pancreatitis. उसके अलावा कोई अदर कॉजेज याट्रोजेनिक कॉजेज हो सकते हैं सच एज ERCP and drugs such as sulfa drugs, protease inhibitors, etc. So the diagnosis of acute pancreatitis, that's on the criteria. अगर क्राइटेरिया मैच हो जाए तो फिर acute pancreatitis को हम डायग्नोज कर लेते हैं. The common signs and symptoms include acute epigastric pain that is often radiating to the back. There will be increased serum amylase and lipase. Lipase is more specific, लेकिन amylase ज़्यादा टेस्ट किया जाता है क्योंकि ease of availability, लेकिन amylase बाकी conditions में बढ़ा हुआ होता है, so it is non specific. लेकिन अगर amylase जो है वो 3 times बढ़ा हुआ हो upper limit से, then it suggests towards the acute pancreatitis. उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स होती हैं, इमेजिंग फाइंडिंग्स सच एज फॉर्मेशन ऑफ एडिमा, फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, जैसे कि आप यहाँ पे इमेजिंग में देख सकते हैं. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस इंक्लूड सीडोसिस्ट फॉर्मेशन. सीडोसिस्ट इज lined with granulation tissue and not epithelium. So this is the differentiating point between the cyst and the cirrhosis. जो cyst है it is lined by granulation tissue, जबकि cyst is lined by epithelium. उसके अलावा एप्सिस फॉर्मेशन हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, हेमोरेज हो सकती है, इन्फेक्शन एंड ऑर्गन फेलियर सच एज एक्यूट लिवर इंजरी और फिर या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, शॉक हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है. एंड मोर अगर आपको और इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ दो साइंस एसोसिएटेड होते हैं, डेट इज द कलन साइन एंड द ग्रे टर्नर साइन. The Cullen sign is the hemorrhage under the skin and around umbilicus. The Grey Turner sign is hemorrhage under the skin and around the flank area. These two are also commonly seen with acute pancreatitis. Then moving on, we have the chronic pancreatitis. Chronic, as the name suggests, is a chronic inflammation that is associated with atrophy and calcification of the pancreas. The major risk factors for chronic pancreatitis include alcohol use disorder and genetic predisposition, यानी कि cystic fibrosis हो गई या फिर कोई और डिजीज हो गई.
Complications include pancreatic insufficiency and pseudocyst formation, same as acute pancreatitis. So pancreatic insufficiency typically when less than 10% of pancreatic function may manifest with steatorrhea, fat-soluble vitamin deficiency and diabetes mellitus क्योंकि pancreas जो है insulin secrete कर रहा होता है and it secretes enzymes for the digestion of fats and minerals तो वो भी अगर absorb नहीं होंगे तो उनकी deficiency हो जाएगी insulin secrete नहीं होगा तो diabetes mellitus हो जाएगा एंड क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस में ये फाइंडिंग ज़्यादा कॉमन होती है कि उसमें अमाइलेज लाइपेज एलिवेटेड नहीं होते एज कम्पेयर टू एक्यूट पेनक्रेटाइटिस सो देयर इज डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी लेकिन अगर सीटी स्कैन करवाया जाए तो उस पर प्रॉपर कैल्सिफिकेशंस मिलती हैं डेट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ द क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस. So the last topic that is remaining is the pancreatic adenocarcinoma. Pancreatic adenocarcinoma is very aggressive tumor arising from the pancreatic ducts that is due to disorganized glandular structure with cellular infiltration. It is often metastatic at presentation with average survival rate of approximately 1 year after the diagnosis. The pancreatic adenocarcinoma is a really aggressive tumor and it has really bad prognosis. Tumors are more common in the pancreatic head and leads to obstructive jaundice associated with CA19-9 tumor marker, also CEE, that is the carcinoembryonic antigen, but it is less specific. CA19-9 marker is more specific for pancreatic adenocarcinoma. The risk factors for pancreatic adenocarcinoma include tobacco smoking, chronic pancreatitis, especially अगर 20 साल से ज़्यादा chronic pancreatitis हो, diabetes, and अगर age, old age such as more than 50 years. These are the risk factors. लेकिन pancreatic adenocarcinoma के presenting signs and symptoms include abdominal pain that is radiating to the back, same as the pancreatitis. There will be weight loss क्योंकि cancer में weight loss is the most common symptom. उसके अलावा migratory thrombophlebitis, that is the redness and tenderness on palpation of the extremities. This is also known as Troche or Troche syndrome, by the way. Then we have the obstructive jaundice, as we discussed before, obstructive jaundice with palpable and non-tender gallbladder, that is known as Kurvoiser sign. So these two signs, Kurvoiser sign and Troche syndrome, are specific to the pancreatic adenocarcinoma, and whenever present, these hint towards this pathology. इसके अलावा you need to remember that it is a bad prognosis. It is also associated with BRCA1 or BRCA2 mutations, and the often treatment is not as curative as expected. इसमें कीमोथेरेपी भी इतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं देती और रेडियोथेरेपी भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती. The only available treatment is the small bowel resection, that is known as the Whipple's operation. So Whipple's operation में पेनक्रियाटिकोडुडिनोएक्टोमी होती है जिसमें पेनक्रियाज एंड ड्यूडिनम के जो इन्वॉल्व पोर्शन होता है उसको निकालना पड़ता है. उसके बावजूद भी जो पेशेंट है वो काफ़ी डेबिलिटिंग कंडीशन में होता है एंड ट्रीटमेंट इज़ नॉट एज इफेक्टिव. So this concludes our topic of the GI tract pathology, and we have covered all its topics including hepatology and GI separately. In our next sessions, we are going to study pharmacology of the GI system, and that will conclude our module of the GI tract from first year. Thank you.